in UPSC, and then first, and before that we will discuss this test paper. ठीक है, ये काम करेंगे हम लोग आज. If time permit, then we will move further. If time permit, fine. So let's discuss. Question आपके सामने है. I hope you have gone through. You have, how many of you have solved it? Shiva, have you solved it? Not yet. Yes. What about you, gentleman? Yeah. No, yeah. Why? He solved it. Have you submitted? I haven't did this OMR sheet, sir. I only did the ठीक है, आपने कर दिया? आपने आपने तुमने नहीं किया? ठीक है, ले लेना क्वेश्चन और सबमिट कर देना. So let's discuss. See the first question. This is from historical background of Indian constitutionalism, and read it and solve it. Tell me what would be the answer of first question. In the context of Regulating Act 1773, consider the following statements. So let's see. पहले देख लेते. It designated Governor of Bengal as the Governor General of Bengal. It is correct. Yeah, this is correct statement. यहाँ से लेना पड़ेगा ना पेन. So this is correct statement. Now look at the state. Second statement. It prohibited the East India Company's personnel from doing trade with local people. Now it is correct or not correct? Correct? Yeah, it is correct. Now it abolished trade monopoly of East India Company. No, it was 1813 which abolished the trade monopoly of East India Company and allowed others to come to India and do business. Right? So if you look at 1 and 2 would be correct. ठीक है? Question ऐसे आते हैं. कुछ भी आ सकते question, right? Now look at question number 2. And question number 2 read, with reference to the Government of India Act of 1919, consider the following statements. It divided the provincial subjects into two parts, namely transport and reserve. Correct? Yeah. Now see the next statement. It abolished the Council of India established by the Government of India Act 1858. No, there was no Council of. Then it introduced bicameralism and direct election in India for the first time. Yeah. So where bicameralism was introduced? In union legislature or the state legislature? In the union legislature. Bicameralism was introduced in the union legislature, and the first time election was introduced in India. So if you look at statement 1 and 3, right? तो B होगा हमारा options. ठीक है? Ritaksara, Rahul, Vanita. Now look at question number 3 and make it. देखिए तो ये यूपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन. PYQ मिल जाएगा आपको. The provision to issue an ordinance is the Indian Constitution is based on the scheme provided in the which act? Modelamento Reform 1909, Montagu-Chelmsford Act 1919, Indian Council Act 1861, Charter Act 1833. क्या होगा बताओ? C, right? Rahul कह रहा है A, Vanita is C. Yeah, it would be Indian Council Act when the first time, ordinance was allowed. ठीक है? To issue ordinance was created a scheme. Now look at next question. Question number 4, and look what is this question all about. Make the question. With reference to the Government of India Act 1935, consider the following statements. The Act provided for all the establishment of All India Federation, correct?
It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. Correct है या नहीं? Does it introduce? सही है, ये भी सही है. Okay. The residuary power were given to the viceroy. Residuary power, you know residuary power क्या होता है? Anyone who does not know residuary power? Do you know what is residuary power? Power which is not going to the state or Yeah. The power which is not included either of the list. There are 3 lists: union list, state list, and concurrent list. So if you look at Government of India Act, was the first time which provided 3 lists, right? List 1, list 2, and list 3. That was Government of India Act. Fine. And in the list 1 there was so many subject. In list 2 there was so many subject, and list 3 there were so many subject. Now any item which does not exist either here or here, that can be called residuary power, and residuary power was given to the viceroy. So you see all 3 are correct. D. Now look at this question number 5. See, question number 5. Which one of the following is not a feature of Charter Act 1833? Read it and make it. Which one of the following is not a feature of the Charter Act of 1833? It deprived the power of the Governor General of Bombay and Madras. It ended. अच्छा, ये correct है? Was it feature? Yes, sir. It ended activity of East India Company as a commercial body. Was it fact? Huh? Yes, sir. It introduced an open competition for civil services. अच्छा, introduce किसने किया था? 1853. Yes. हर 20 साल के बाद उसको लाइसेंस मिलता था, इसीलिए 20 साल का अंतराल है. Right? Now it made the Governor General of Bengal as a Governor General of India. Who was the first Governor General? Huh? Lord Canning. Right? So ऐसे ही बनाते जाना है. 5th हो गया, नीचे क्वेश्चन है. Yeah. See the question number 6th. सर मैं ऐसे ही look at this question is in the context of Government of India Act 1858. Consider the following statement. ये पूछ रहा है Government of India Act 1858. Now look at the statement. This side. (1858), right? Now look, read the statement. Lord Canning was the first Viceroy of India. The Secretary of State for India office came into existence. It initiated the process of decentralization. No? अच्छा. So ये decentralization का process शुरू हुआ था 1861. Very good. So Lord Canning was the first Viceroy, and the Secretary of State for India office came into existence. अच्छा. Can you tell me where this Secretary of State for India used to sit? Where this Secretary of State for India used to sit? British Parliament. Right? They used to sit British Parliament. There used to be a cabinet minister. वो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, जैसे होता है ना फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, उसी तरह से एक या था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. ठीक है, और उसके अंदर आते थे वाइसरॉय. चलो, तो 1 and 2 would be the correct. 1 and 2A would be the correct answer. You match your answer. Now look at question number 7. पढ़िए तो question number 7 और बनाइए तो. Which one of the following is not correct about Indian Council Act 1909? The size of the Central Legislative Council was increased. Not correct पूछ रहा है, right? मतलब खराब ढूंढना है. It allowed members of the Legislative Council to raise supplementary question. It legalized communalism in India. It established a double government in India.
No, so this is not correct, right? है ना? This is not correct. Now, पहले डुअल गवर्नमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था? इसके आगे पीछे 1919 में भी डुअल गवर्नमेंट दायर की, और 1784 ना पिट्स इंडिया एक्ट, वो भी अगर मिलेगा तो वहां पर ध्यान रखना है. पिट्स इंडिया एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. So this statement is not correct. Otherwise, all three statements are correct. One minute. Question number 8 करना है ना? With reference to the Constitution, consider the following statements. The Government of India Act of 1919 extended the communal representation. सही है ये? अच्छा, किसको किसको दिया गया यहाँ पर? 6 को, right? ठीक है, एंग्लो इंडियंस को भी दिया गया, right? So it extended the communal representation. Pune Pact was a consequence of communal award, was it? Really? Ramsay MacDonald ने दिया था. He was a member of Fabian Socialist Party, right? Yeah, so Pune Pact was basically after the communal award. Communal award कब हुआ था issued? राउंड टेबल 1 के बाद या राउंड टेबल 2 के बाद? 2 के बाद. आरटीसी 2 के बाद 1932 में. ठीक है, आरटीसी 2 होता है दिसंबर 1931 में, और ये 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड बेसिकली ग्रांटेड separate electorate for the depressed classes, but Gandhi was not happy. Yeah, Gandhi sat fast on to death. कौन से जेल में? Yeravada jail in Pune, right? Where Gandhi and Ambedkar had a very healthy conversation regarding the security of the depressed classes, later on called Dalit or SC, right? अच्छा, तो दोनों सही है क्या? Both statements are correct? Yeah. Both 1 and 2 are correct. Now, there are one thing I would like to mention here. कि मान लो कि आप तो ये तो कर लोगे weekly, probably next week I'll also take test. नहीं, 3 ही दिन है, कल ही है, तो next week नहीं, next week I'll take test, objective, right? And few question on subjective, like on socialism, on secularism, on democracy, I can give you question. Secondly, you must be thinking कि sir क्या source लिया जाए अभी practice के लिए. You buy a PYQ of state PCS. वहां पे बहुत सारी factual भी होता है, conceptual भी होता है, right? PYQ का स्टेट PCS का होता है ना, हरियाणा स्टेट PCS का ले लिया, ये उत्तर प्रदेश PCS का ले लिया, मध्य प्रदेश PCS ले, क्वेश्चन बैंक ले लो, और पॉलिटी जो हम लोग जिस चैप्टर को करते जा रहे हैं उसी चैप्टर पे उसको भी करो, और PYQ जो UPSC का है वो तो हम कराते ही जाएंगे, राइट? तो उसमें क्या होगा, what will benefit to you, right? Even the basic facts you will get to know about the historical background or about preamble. ठीक है, जब फेडरलिज्म करेंगे तो फेडरलिज्म, राइट? सो ऊपर से नीचे तक सारा चीज आपके दिमाग में रहेगा, है ना, राइट? बिकॉज यू ऑल्सो विल फिल द PCS फॉर्म, मेनी ऑफ यू. नहीं होता है ना, हम उसको भी भरते हैं, बिकॉज ऐसा है कि हाँ, ऐसा नहीं लगता कि एग्जैक्टली श्योर है, नहीं ना, थोड़ा सा अल्टरनेटिव भी रखते हैं, ऑफ कोर्स. हमारा ये क्वेश्चन नंबर हमने 8th किया है ना, समझ में आया कहां से करना है? PYQ खरीदना है और अच्छी पब्लिकेशन का खरीदना है. जैसे मैं कल बता दूंगा क्लास में कुछ पब्लिकेशंस के बारे में, यू कैन बाय, राइट? अरिहंत का PYQ खरीद सकते हो, राइट? और एक आता है उत्तर प्रदेश में, बड़ा फेमस है, नाम भूल रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी फेमस इन उत्तर प्रदेश. Not a spectrum. I'll tell you tomorrow. If you know, if you can guess, अगर आपको पता हो कौन सा
नॉट प्रकाश पब्लिकेशन, घटना चक्र, यस, घटना चक्र का आता है। यस, ये राइट यार, घटना चक्र का आता है। घटना चक्र इज उत्तर प्रदेश बेस्ड, इलाहाबाद बेस्ड पब्लिकेशन, बट इट्स गुड वन, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहां के पीवाईक्यू, यू टेक द योर स्टेट पीसीएस, वहां पर क्या करना है, आपको क्वेश्चन उस चैप्टर से लेना है, सॉल्व करना है, दैट्स यू हैव टू डू। ऐसा नहीं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और प्रियम्बल करने बैठे तो पार्लियामेंट का भी कर ही लेते। नो, यू डू एज वी प्रोसीड। ठीक है, क्योंकि यू नीड। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। लुक एट, इनिशियली सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अनाउंस्ड बाय द लॉर्ड मिंटो, सैमन कमीशन, रैमसे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड माउंटबेटन। राहुल ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। व्हाट डू यू थिंक? शिवा, मिंटो पक्का ना? हाँ, बोलना है, ठीक है, बोलना है मिंटो। Yes. Now look, question number 10. With reference to the Constitution, consider the following statements about the Government of India Act 1935. Now see the statements. The Act introduced federalism in India. Yeah, correct. It empowered the Viceroy for the first time to issue an ordinance. No, of course, ordinance was already there in 1861. ठीक है, तो ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा। And it provided joint public service commission, is it? Yeah, there was a provision for joint service public commission. So 1 and 3 would be the answer. ठीक है, तो अगर if you read very in a systematic manner, if you do practice, ऐसा नहीं कि तोप है, राइट? मैं बता रहा हूँ 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बैठते हैं। अब ये कोई लॉजिक है? 13 lakh people fill the form for UPSC, only 5 lakh people go for examination. अब देखो, और 5 lakh में से let me tell you, only 1 lakh people who are actually rigorously preparing. Let me tell you. और जो भीड़ देख रहे हो ना, लोग आ रहे जा रहे, यहाँ कोचिंग कुछ नहीं करना, आपको बस टॉपिक वाइज सिलेबस, पीवाईक्यू, ये चीज 2 चीज बहुत दिमाग में रखना है। और जो भी करते जा रहे हो, वट एवर like you are finishing one paper, one chapter in history, now you should be able to solve the question of 5 years, last 5 years, right? Or you are expected to also solve for the next 3, 4, 5 years. ठीक है, ये इतना एक्सपेक्टेशन होता है, तो वो क्वेश्चन देखना अपना कि बनेगा कि नहीं बन रहा है, कि नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, इंफॉर्मेशन की कमी है या थोड़ा सा IQ नहीं लग रहा है, राइट? फॉर एग्जांपल, बाय द एग्जामिनेशन इज May 27th, राइट? दिस वे ना। सो हम पॉलिटी का सवाल लेके देखेंगे कि अच्छा होता है कि नहीं होता है, राइट? आई विल गिव यू सम प्रेडिक्शन को कि देखना इस चैप्टर से इतना, इस चैप्टर से इतना, इस चैप्टर से इतना आएगा, एंड देन वी विल एनालाइज आफ्टर द एग्जामिनेशन। एवरी ईयर आई डू, राइट? कि हाँ भाई देखो कितना आया है, नहीं आया है, राइट? सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, राइट? बट आई कांट श्योर कि हाँ ऐसा ही होगा, राइट? UPSC may change its pattern, right? But you can just track UPSC कि क्या पूछ रहा है, and if you keep the track record, you can be a little predictor. नहीं, अगर मैं इनको ट्रैक रिकॉर्ड रखूं 2 साल तक, तो 2 साल पहला दिन जो है वो मैं कह सकता हूँ ये क्या करने वाले हैं। But he is a dynamic, like human nature is also dynamic. Similarly, UPSC is also dynamic, right? I cannot guarantee, or any teacher cannot guarantee कि अगले साल वो पूछेगा क्या, राइट? हाँ, बट ट्रेंड अगर आपने पकड़ लिया तो ऑफ कोर्स आप कैप्चर कर लोगे, राइट? वो पकड़ना बहुत जरूरी होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. Consider the following statements about Charter Act of 1813. The act abolished trade monopoly of East India Company. ऐसा हुआ क्या? The trade this act abolished trade monopoly of East India Company. किया क्या? Is it? Yeah, it is correct. The act abolished trade monopoly of the East India Company except trade in tea and trade with China, right? तो ये correct है ना? Monopoly खत्म हो गया. Now look at
means other statements. It allowed Christian missionaries to come to India. The act continued a monopoly of East India Company over trade in tea and trade with China. So I think all correct. 1, 2, 3. All three are correct. D, yeah, Rahul, right. D will be correct options. Now see question number 12. देखिए तो question number 12. In the context of Indian Council Act 1861, consider following statements. The act included Indians in the Legislative Council, is it? Yes, sir. Why? Why is it allowed Indians to? Why it included Indians into Legislative Council? Yeah, 1857 revolt was in their mind, and they thought we should include Indian, right, and make it more representative, right, so that they can make a bridge, right. This representative could be a bridge, right, between us and the people of India. So basically this act included Indians in the Legislative Council. ठीक है? अच्छा, it initiated the process of decentralization. Is it? Yes, it initiated the process of decentralization, right. आप देखोगे कि कंपनी जो है ना 1773 से ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड concentration of power till 1850, not 753 tak, right. And thereafter, if you look at, initiated decentralization, and this was the first act in process of decentralization. ठीक है? अच्छा, the act recognized the portfolio system in government. Is it? What is portfolio system? नहीं, portfolio system ये ministry वो ministry portfolio मिलता है ना, right? For finance ministry, what portfolio this person has? He has a finance ministry portfolio. So is it this act recognize this? Yes, sir. Yeah, yes. So all statements here, all three statements are correct, right? Yes, Rahul, you're right. Now look at question number 13. Look at Asha, Vanita, Rita, Apsara, make it. The Government of India Act of 1919 clearly defined the separation of power between judiciary and legislature, the jurisdiction of the central and the provincial government, the power of the Secretary of State for India and Viceroy, and D is none of the above. क्या होगा बताओ? कौन सा होगा? बी. वनीता ने कहा बी. यस, बी होगा. यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट? क्या मतलब है? This first time in 1919, if you look at central government, decontrolled, controlled hota hai, you just concentrate. Decontrol means you just give some loose, right? So it's the first time it divided, the jurisdiction of the central government and provincial government. Okay? The provincial government will make their own law. The central government will make their own law on action. And further, the provincial list, subjects had been divided into two parts, right? The one is called transferred and another is called reserved. Reserve, yeah. So B would be the correct answer. ठीक है, चलो इसको याद रखना है, बहुत फैक्चुअल है ये सब. ठीक है, फैक्चुअल दो होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं फैक्चुअल, राइट. कॉन्सेप्चुअल आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, राइट, अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है तो. इफ योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज देयर. फैक्चुअल क्या है? यू मस्ट रिमेंबर सम फैक्ट्स, है ना. नाउ लुक एट this question. The Montagu-Chelmsford proposal was related to, this was again came to
यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये PYQ से है। The Montague-Chelmsford proposal were related to social reform, educational reform, reform in police administration और the constitutional reform. क्या होगा ऋतिक, बताओ क्या मारे थे तुमने? नहीं किया था जी, आप डी मारा था। आपका नाम मैं भूल गया। ईशांत, ईशांत, प्रियंका, शिवा, आपका नेम आई एम आस्किंग। विनय, या योर? तनुश्री, तारुषी, ओके, हाँ अब याद रहेगा ना मुझे, 2-3 या। तो क्या होगा? इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, राइट? देयर वाज ऑलरेडी डिमांड फॉर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the federation established by the Government of India Act 1935, residuary power were given to the Governor General. पक्का? Now ये भी आया हुआ है। Now read question number 16. Consider the following statement about Charter Act 1813. It ended the trade monopoly of the East India Company in India except trade in tea and trade with China. करेक्ट है? अभी हमने किया था, करेक्ट है? Then दूसरा, it asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territory held by the company. करेक्ट है? Yeah. The revenue of India were now controlled by the British government. Is it? No. Right? So look at 1 and 2. ठीक है? किया है ना ए या नहीं किया है? प्रियंका किया है? ठीक है? अब देखो, अच्छा 16 तो हो गया। Now look at question number 17. Which one of the following statement is not correct about the Constituent Assembly of India? हाँ, its members were directly elected, ये correct नहीं है। It was formulated by the cabinet mission plan. Sachidanand Sinha was the first president. Princely states nominated their representative for the Constituent Assembly, ये भी correct है। Members were not directly elected. Members were also nominated, right? So it was a partly nominated and partly elected, partly nominated and partly elected assembly. ठीक है? Fine. अच्छा, इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं और यूपीएससी में भी आते हैं। तो यूपी पीसीएस का यू शुड बाय, उसका क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक ठाक होता है। यूपीएससी और पीपीसीएस का क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। तो आप कौन सा पब्लिकेशन बोला था तुमने? घटना चक्र का खरीद लो। चाहे हाँ एक साथ ही है, वेरी गुड, तब तो और उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। यू बाय 1 एंड देन यू नो गेट 3। हाँ होता है ना, अभी भी वो सेल चल रहा होता है, बाय 2 गेट 6, बाय 5 गेट 9, राइट? सो दैट इज वेरी गुड। अच्छा है कि वहीं पर आप एक साथ सब कुछ मिल जाएगा। और हम भी उसी चक्कर में रहते हैं कि भैया खरीदने एक है और उसके साथ 2-3 और मिल जाए। नहीं क्या तब नहीं खरीद तो फ्रेश खरीद तो? हाँ तुम्हें बात कर रहा हूं। मैं तो खरीदता हूँ भैया जब डिस्काउंट रहता है 70%। हाँ है ना, सब लोग तभी जाते हैं। क्या तुम कब जाती हो? जब फ्रेश आता है तभी। हाँ मम्मी के साथ, खुद नहीं खरीदते? हाँ तो खुद ही जाना पड़ता है। ले हाँ एनीवे चलो, अब उसने ऐसा टॉपिक ले आया तो फिर हम बात ही नहीं कर सकते। अच्छा चलो आगे 18th बनाओ, सॉल्व इट 18th। In the context of the Constituent Assembly, consider the following statements. Each province was to be allocated seats in proportion to their population. Correct? Right? Seats allocated to the British provinces were principally divided into 3 communities: Muslim, Sikh and General. Right? Seats were elected from the provincial legislature on the basis of proportional representation. ये भी correct है, कोई भी गड़बड़ नहीं है।
Seats were elected from the provincial legislature on the basis of proportional representation. So D would be the correct answer. Look at question number 19. Solve it. C. D. अच्छा देखते हैं. The seats to the British Indian provinces and provincial states in the Constituent Assembly were allotted first on the basis of their contribution to Indian economy by the agreement between provincial legislative assembly and princely states on the basis of geographical importance and their contribution in freedom struggle in proportion to their respective population, right? Now this population is creating lots of problem in India, especially the great divide between north and south, right? जब finance commission पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा. If you look at the southern states are claiming that they are losing the revenue and financial aid from the center, right? Because of the 15th Finance Commission recommendation, right? Okay, why 15th Finance Commission? Because 15th Finance Commission recommended 2011 census should be considered as a distribution of resources. But if you look at the earlier Finance Commission that recommended 1971 census should be taken in order to distribute financial resources. Now, if you look at 1971 census, comparatively, there is no much difference between the northern states and southern states in terms of population density. But now there is a much difference. 2011 much, right? Different. Anyway, we'll see there. Look at question number 20. There was no role of the Muslim League in the formation of Constitution of India, as the Muslim League was delegitimized as a political party in India. There was no assurance that the minorities would have once the British left. The Muslim League refused to participate in the election process. It had boycotted meeting of the Constituent Assembly, citing the demand for partition. Yeah, direct action day came. अगर हिस्ट्री पढ़ा हो तो उन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया इसको. They were always boycotted. And if you look at the Constituent Assembly, waited very long time, right? And meanwhile they discussed fundamental rights. अगर मैं fundamental rights इतना दिन पढ़ाता हूँ, right? Because the Constituent Assembly had talked about it. Polity is all about citizen and the government. Polity is all about citizen and government, right? And citizen is all about individual plus liberty. Citizen is always all about individual plus liberty. A citizen which has no liberty is a slave citizen. Slave, it isn't, they are slave. अगर किसी भी सिटीजन से उसका लिबर्टी छीन लो ना तो क्या हो जाएगा वो? सब्जेक्ट हो जाएगा, स्लेव हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. यस, नहीं. वो कल पूछ रहे थे सर इतना लिबर्टी क्यों पढ़ा रहे? गांधी 30 साल लड़े उसी लिबर्टी फ्रीडम के लिए. We have to study a lot. पूरा जो fundamental right, it is all about liberty, right? Now look at question number 22 ना. अच्छा 21 और नीचे करना है. अच्छा नीचे ही है. Look at the constitutional government by the definition can be best defined by which of the following? Limited government, right? ये लास्ट है limited government. या constitutional government का ही मतलब होता है, इसका मतलब होता है individual with liberty and government with limitation. Constitutional government का मतलब होता है an individual with liberty, a government with limitations, right? अपने औकात में रहे सरकार. Now India is a secular state, which means a state बनाइए तो does not have official religion, cannot intervene in the religion matter, can intervene to reduce discrimination. 1 and 3, huh? 1 and 3. C.
Now look at question number 23. Which one of the following is not a characteristics of a secular state in India? कौन सा है? Yeah, India, we don't follow complete separation of religion from state. Now this is a based purely कहां पर है ये? वेस्ट में, फ्रांस में, यूएस में. या बोल. क्वेश्चन नंबर 22. एक मिनट देख लेता हूं. या India is a secular state, which means a state cannot intervene in religious matter. Yes. So it does not have official religion. It is correct. Cannot intervene in religious matter. It is wrong, because Indian state can intervene in religion matter. It has already done. For example, triple talaq, abolition of triple talaq. Now look at the abolition, the Uniform Civil Code. Indian state is intervening. आज इंडियन एक्सप्रेस में बहुत मस्त आर्टिकल आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर. राइट, वो शुरुआत ही करता है राइट एक गाने के साथ. खामोशी मूवी का एक सॉन्ग है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो. राइट, हाउ इन स्टेट इज इंटरवीनिंग इन लव अफेयर ऑफ यंग, है ना. उसमें क्या है कि जब कोई भी यंग है और उसको रजिस्ट्री भी करना है लिव इन रिलेशनशिप को, और उसको फिर क्या करना है, विड्रॉ भी करना. व्हेनेवर यू हैव टू नो, होता है ना, कभी एक साथ रहे बाद में टूट गया, नहीं चल पाया. राइट, इट्स फाइन, इट्स इंडिविजुअल लिबर्टी. ना उसके वो भी कराना है कि यू आर नॉट इन रिलेशनशिप. ठीक है. सो और उसमें दिया कि सी आफ्टर दिस बाय एम्पावरिंग लॉ, now if you look at the moral policing will be more. कोई लड़का लड़की मिला, अच्छा आप लिव इन में रहते हैं, आपका रजिस्ट्री है, हाँ कागज दिखाइए, यस, many thing will follow. नहीं होता है ना, जैसे आपका बोलता है कि आपका प्रॉपर्टी है, कागज दिखाओ. Anyway, so it's a good article, read it. Got the idea, Priyanka? Indian state cannot intervene, गड़बड़ है. Indian state intervenes. अभी देखो आए पूरा महोत्सव मना के 22 जनवरी को, है ना. नहीं बात क्यों नहीं किया जाए, बात तो खूब करना चाहिए. बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दिमाग में रखना नहीं है, जो है मन में बोल दो. अब देखो 24. Which one of the following is a suitable feature of Indian concept of secularism? अब देखो तो, presence of state in religious matter but absence of religion in state institution, or presence of state in religious institution and religion in state institution. ये सही है. Total non-interference of state, ये तो गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है. Now if you look at presence of state in religious institution and religion in the state institution, religious features in a state institution like national song, Bande Mataram, right? So ये है. ऐसा है कि ऐसा नहीं कि absence है पूरा state, right? जैसे for example prime minister had taken a very much उसको डंडा को क्या बोलते हैं, Sengol, yeah. Now look at how Sengol is a very much religious, right, things. Now that has been kept in parliament, right? So this would be the answer. ठीक है. अब क्या है 21 हमारा हो गया ना. 21 25 आई थिंक यही लास्ट है शायद. In the context of objective resolution, consider the following statements. It is a fundamental source of the philosophy of the Indian Constitution. It enshrined the aspirations and values behind the constitution making.
It was unanimously adopted by the Constitutional Assembly on 26 January 1947. हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे इतना फैक्चुअल नहीं पूछता है यूपीएससी. हाँ, but yes, this is wrong. Both are correct. So 1 and 2. Now you check yourself. ठीक है? You check yourself. कितना सही हुआ? तारुषी. तारुषी ना? 21 सही हुआ. Very good. अच्छा है. ऐसा ही हर चैप्टर में होना चाहिए, राइट? और बेटर, अच्छा कितना अटेम्प्ट किया था? 25. हाँ, try to not attempt those you don't know completely, right? Make this in your habit, right? कि जो मुझे नहीं आता है मैं उसे अटेम्प्ट नहीं करूँ, नहीं पता है तो ठीक है. बट इसमें तो सब कुछ आता है, मतलब बहुत आता था, थोड़ा थोड़ा से हो जाता है ना, थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम हो जाता है. नाउ लुक एट क्वेश्चन. इसी में है ना सब्जेक्टिव. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. Do you think that Government of India Act 1919 was an act for introducing responsible government in India? Discuss. क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आएगा, राइट? किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है. वो मैं जीएस की बात कर रहा हूं अभी, ऑप्शनल की बात मत करना, अभी जीएस की बात कर रहे हैं. नाउ स्ट्रक्चर वुड बी, यू नो, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, right? The first step would be introduction. The first step would be introduction. Now, how much you write in your introduction? Is it 10 line, 30 line, right? Now, let me tell you, if you write 2 to 3 lines for your introduction, that would be enough. Now, what should you write in introduction? दिमाग में ये आता है कि सर लिखना शुरुआत कहाँ से करना है, right? कहाँ से शुरुआत करना है? Start with some basic idea about that theme. For example, here theme is Government of India Act 1919, right? Now one can start with the aim of Government of India Act 1919 was to introduce responsible government in India. Although attempt has been taken, you know, earlier in 1861 Council Act, 1861 Council Act, 1853, 1861, 1892, right? ठीक है, 1909, but this was the first act. ठीक है? So, right, yeah, one can start with Government of India Act 1919 is also known as Montagu-Chelmsford, जो generally लोग करते हैं, right? Montagu-Chelmsford reform, right, which brought many changes in, you know, constitutionalism in India. ठीक है? तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है. अब क्या करना है? सेकेंड जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से पहले आपको एक पिक्टोरियल पिक्चर बनाना है. ठीक है? बड़ा पिक्चर नहीं बनाना है, ऐसा कुछ बड़ा डायग्राम. अब सिंपल, जैसे कि यहां पर है इंडिया, यू नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इस पिक्चर में आप क्या करेंगे? तो जितने भी फीचर्स हैं वो सब आप उसमें लिख देना है, राइट? For example, division in central and provincial legislature, right? Introduction of bicameralism, direct election, extension of franchise. समझ रहे हो, right? जो भी फीचर्स है ये कर देना है. उसके बाद आना है बॉडी पे. Now बॉडी में you should, इतना समझ में आया? इंट्रोडक्शन, बेसिक थिंग्स यू हैव टू राइट अबाउट थीम. जो पूछ रहा है, मान लीजिए कुछ एनर्जी सेक्टर के बारे में क्वेश्चन आया. नाउ फर्स्ट यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट एनर्जी, राइट? हाउ एनर्जी इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. समझ में आया? उसके बारे में लिखना है, राइट? या धर्म के बारे में बहुत सारा एक ऐसा रहे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्राह्मणिकल एंड, यू नो, बुद्धास धर्म. तो पहले आपको धर्म से शुरू करना है इंट्रोडक्शन में, एंड देन बॉडी पे आना है. बॉडी में क्या है करना है? यू हैव टू एड्रेस द क्वेश्चन. Address the question
according to their demand, according to its डिमांड। देखना कि डिमांड क्या है सवाल का, राइट। और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, जैसे 150 वर्ड में है तो अगर आप 6 छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन का पैराग्राफ लिखना है। ऐसा नहीं कि हमने क्या किया एक ही पेज में एक पैराग्राफ लिख दिया, शुरू किया यहां से और पूरा, वो बड़ा बेकार लगता है, राइट। सो यू हैव टू राइट इन पॉइंटर फॉर्म। लेट मी टेल यू, आपको पॉइंटर फॉर्म में लिखना है, राइट। पॉइंटर फॉर्म में आप जैसे एरो एरो बना के लिख सकते हो, या कोई ऐसे बना के लिख सकते हो, राइट, या ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो, या कुछ भी, राइट, या कोई ऐसे लिखता है, डिपेंड्स ऑन, राइट। कोई ऐसे गोला बना के फिर लिखना शुरू कर देते हैं, डिपेंड्स ऑन आपको क्या पसंद आता है ना। या गोला नहीं बनाना चाहते हो, सिंपल सिंपल लिखना चाहते हो, राइट। तो 5-6 पैराग्राफ आपको, छोटा छोटा पैराग्राफ लिखना है, 3-3 2-2 3-3 की लाइन का, ठीक है। वर्ड अगर 150 में है तो 5-6 पैराग्राफ में ऑलरेडी 150 वर्ड हो जाएंगे, राइट। और क्या लिखना है भैया, क्वेश्चन को एड्रेस करना है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस तरह है वो बताना है। हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज 1919 वाज अ रिस्पॉन्सिबल एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट दैट यू हैव टू टेल, राइट। हाउ इट वाज अ रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, accountable, responsive to the people, how it was actually responded to the people demand for election, for extension of prize, right, for extension of representation, communal representation, right, voting rights had been extended, समझ में आ रहा है, there was bicameralism was introduced, budget was discussion on budget was allowed in the provincial council, right. Even there was a decontrol or decentralization, right. It was the first time when center decontrol and the provinces, right, and provinces subject was actually divided between reserve and transferred, right. तो जो भी फीचर्स है ये आपको यहां पर लिख लेना है, वही फीचर्स जो आपने यहां पर लिख रहे हो ना, उसी का जो मेजर पॉइंट है वो इसी यहां पर लिखना है। डायरेक्ट इलेक्शन समझ में आ रहा है, एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइज समझ में आ रहा है, ठीक है, यही लिख के नाउ यू कम टू द थर्ड इज कंक्लूजन। अब दिमाग में होता है कि भैया कंक्लूजन में लिखना है क्या है, राइट। कंक्लूजन में क्या लिखना है, कितना लिखना है, पूरा भर देना है एक पेज, नहीं, राइट। अगेन हियर 2 to 3 लाइन बहुत है, 2 से 3 लाइन बहुत है कंक्लूजन में, राइट। अब कंक्लूजन में क्या करना है, यू हैव टू राइट समरी ऑफ द बॉडी, राइट। और लिख देता है इन सम we have, as we observe, this act has extended this, hence it was a first act of responsible government, that's all, खत्म। समझ में आया, ऐसे आंसर लिखना है, राइट। कुछ मतलब लोगों मुझे मिला है आंसर्स, वो आधे पेज का एक पैराग्राफ है, नो, ऑलवेज राइट अ वेरी प्रिसाइज, डू प्रिसाइज राइटिंग, जो भी कहना है 3 लाइन में कह लेता है, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में लिखना है, आज कौन सा तारीख है, 13 ना, ठीक, हाँ, sorry, I have not checked, had you submitted already, अच्छा अभी दे देना, मैं भी चेक कर लूंगा, राइट। और किसका किसका सब्जेक्टिव नहीं चेक हुआ है, मुझे दे देना अभी, राइट, मैं भी चेक कर लूंगा, फाइन। समझ में आया क्या करना है, कैसे लिखना है। नाउ इफ यू सी द सेकंड क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही है। एक चीज और बता देता हूं, फॉर 150 वर्ड्स यू विल हैव 2 साइड्स, ये A4 साइज है, ये A4 साइज है, इसको हम फोल्ड कर ले,
ये दो साइड, अब देखो ना यहाँ पर मैंने आपको जो स्पेस दिया था वो दो साइड्स दिया था, एक ये पेज और एक ये पेज। कुछ चीजें दो पेज दिया था, तीन पेज चला गया, तीन पेज था, दो ही साइड में लेंगे आपको। नाउ वन थिंग यू कीप इन माइंड, योर साइज ऑफ द वर्ड शुड बी moderate. Your size of the word should be moderate. It should not be so small so that 150 words exist only one side. No, or you should not write so much big word so that you cannot write 150 words in two sides. So you write in a moderate, ठीक है, neither large nor small, so that you can fill both the sides. आपको पता है कि जब फिल बड़ा बड़ा लगता है तो इवैल्यूएटर को भी अच्छा लगता है, हाँ ठीक है। What the idea? Your appearance in your evaluator see how your answer is arranged basically. ठीक है, समझ में आया? Now सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 3 पेज दिया था, दे दिया होगा, हमने सवाल बस बना के दे दिया था उनको। Now click. Why is it said that the Government of India Act 1935 extended the responsible government in India? Give reason in favor of your argument. Right? अब इंट्रो क्या करेंगे हम इसको, पहले दिमाग में रखेंगे स्ट्रक्चर क्या बनाना, कैसे स्ट्रक्चर होगा। राइट? स्ट्रक्चर में पहले क्या होगा हमारा, इंट्रोडक्शन। राइट? इंट्रोडक्शन कितने लाइन का होगा, 2 to 3 लाइन। अगर बहुत ही डिमांडिंग है तो आप 4 लाइन भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि 3 लाइन में ही रुक जाना है, या 2 लाइन भी में खत्म कर सकते हो। राइट? बट 3 लाइन इज एवरेज, 4 लाइन भी कर सकते हो, बट 5 लाइन मत करना। राइट? बहुत वो जगह ले लेता है। नाउ देन यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर। राइट? यू हैव टू ड्रॉ पिक्चर। राइट? कोई गोल बना के पिक्चर बनाता है कि ऐसे गोल बना दिया और इसके फीचर्स लिख दिए, है ना। कोई अपना स्क्वायर लिखता है और स्क्वायर करके फिर एरो दे करके, राइट, अब फीचर्स लिख देता है। यहां पर सब्जेक्ट लिख देना, थीम, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ पिक्चर अबाउट योर आंसर। की फीचर्स की वर्ड लिखना है, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा बड़ा मतलब इसको सजाने में टाइम लग जाए, नो। राइट? इमीडिएटली यू शुड जस्ट फिल जो जरूरी है, की वर्ड्स यू राइट, so that evaluator can understand your answer by looking at this. हो सकता है वो उसको पढ़ने का मूड ना हो, क्या मूड है पता नहीं, क्या है नहीं है आपको नहीं पता है। राइट? तो ये देख करके भी उसको पता चल जाए, ठीक है। एंड देन एड्रेस द बॉडी, देन यू राइट बॉडी। बॉडी हमेशा पॉइंटर फॉर्म में लिखना है। और एक चीज और बता देता हूं, बोलोगे सर बॉडी में जब लिखना है तो कौन सा पॉइंट पहले लिखना है, कहां से शुरू करना है, मतलब 0 से 10 तक जाना, 100 तक जाना, या 100 से 0 तक जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले लिखना है। राइट? एंड देन सेकंड, दैट यू थिंक दैट इट्स कॉल्ड कोहेरेंस। राइट? और जो लास्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करके लिखना है। समझ में आया? जो लास्ट पॉइंट है उस सीरीज में, राइट, यहां पर कुछ चुरा के रखना है और इसी से जोड़ के रखना है, दैट इज कॉल्ड सर्कल। राइट? और जो आपका आंसर होना चाहिए कंक्लूजन हो, वो आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना उसी को एड्रेस करके समरी लिख देना आंसर का। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हैंस दिस इज दिस, हाँ, राजा राम मोहन राय, हाँ, ही वाज अ ग्रेट थिंकर, हाँ, लास्ट में आना चाहिए कि हाँ राजा राम मोहन वाज अ ग्रेट थिंकर। व्हाई वाज ही ग्रेट थिंकर? जो भी आपने 6 पॉइंट लिखा है, 6-7 पॉइंट लिखा है, सबके की वर्ड्स जोड़ देना है। he worked this he did this, he did he did this, and hence Raja Ram Mohan was a father of modern India. समझ में आया? This should be the way to write answer. Right? One way. Another may be another way. Another teacher may teach you another style. Right? There is no perfect style, but this would be good. ठीक है? समझ में आया आंसर कैसे लिखना है? फाइन, शिवा, क्लियर?
कुछ और पूछना हो इस ऋतिक बोलो बोलो इधर बोलो. हाँ देगा अभी विनय अटेम्प्ट टेस्ट. Sir, I attended the test, but I didn't give the OMR sheet. You didn't OMR sheet. Okay. So have you given test? Fine, then fine. Have you checked yourself in the classroom? Around 11, 12 are correct. Okay, fine, fine. So improve it, no issue at all. 11, 12 are correct. It means no, you don't remember the facts, right? Sometimes it's hard to remember facts. It happens, right? But you have to read again and again. Let me tell you the books you have to read. हाँ बोलोगे सर किताब कौन सा पढ़ना है? See, this is a bad act that we will deal with, right? And the Lakshmikant, I hope everyone will have. ठीक है? This is the key book that you have to read, and along with the your PYQ नहीं, मटेरियल की बात कर रहा हूं. क्लास नोट्स और ये बस. और चौथा टच भी मत करना, इसी को बार बार पढ़ना, राइट? टच भी मत करना चौथा को, ठीक है? और रीड these 3 materials, ये दो और then class notes. Our discussions, I'll give you notes time to time, right? Most of the notes are actually यहाँ से भी डेटा लिया है. कहाँ से? लक्ष्मीकांत से, वहां से भी है क्योंकि जरूरी है, राइट? Some of the data are from here and there, ठीक है? न्यूज़पेपर से बहुत सारा है. तो यही हमें ऐसे ही पढ़ना है, ठीक? और बताओ, और बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? बाजार में जाकर के देखना नहीं है प्रतियोगिता दर्पण, राइट? डोंट गो एंड बाय प्रतियोगिता दर्पण और दिस दर्पण और दैट दर्पण और दिस, राइट? होता है ना, हम इकट्ठा खरीद लेते हैं, वो चकाचक दिखता है. स्टडी आईक्यू का मटेरियल या कौन विजन का मटेरियल या बाजीराम का मटेरियल, ऐसा कुछ नहीं होता. एक मटेरियल खरीदो और पढ़ो खूब, राइट? और खूब पढ़ो एंड हैव फेथ इन यू. होता है ना, कॉन्फिडेंस. अपने आप पढ़ोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अपने आप. अगर मान लो कि प्रीवियस मई में आंसर क्वेश्चन आता है एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, कॉन्फिडेंट अपने आप आ जाएगा. नहीं, हाँ देखोगे क्वेश्चन, देखोगे और सर पकड़ लोगे, देन इट विल बी लिटिल हेक्टिक टू यू कि अरे यार पढ़ तो लिया एंड वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, ठीक है? रेस्ट यू रीड, नोबल, बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ो, ठीक है? खूब पढ़िए, खूब खूब पढ़िए, राइट? एवरी नाइट यू शुड रीड फ्यू पेजेस ऑफ एनी नोबल, ठीक है? तो और जो भी करना है आपको, जो भी मन करता है ना, आराम से कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करो, राइट? कोई वेब सीरीज देखता है तो वेब सीरीज देखो, राइट? या एंड डू एक्सपर्टाइज ऑन इट. डिवाइड वेब सीरीज इन डिफरेंट कैटेगरी, टोपोलॉजी ऑफ द वेब सीरीज. थोड़ा सा नॉलेज रखो, राइट? या आप क्रिकेट देखते हो तो थोड़ा सा क्रिकेट रखोगे. अच्छा, क्रिकेट का बल्ला, क्रिकेट का बॉल कितना वेट होगा, कितना सरकमफरेंस होगा, हाँ टेस्ट क्रिकेट में कौन सा बॉल यूज होता है, और इसमें क्या नाम है 2020 में कौन सा यूज होता है, ठीक है? ये सब, उसके बैट का जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या है, या पिच. यस यस, लेट मी टेल यू, थोड़ा सा गो इन डिटेल ऑफ दैट प्रोफेशन और दैट यू लाइक. डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, right? Nothing. For example, if you love reading biography, read that 10, at least 4 5 10 biography in 1 year, right? और 4 तो पढ़ ही लेना चाहिए बायोग्राफी, ठीक है? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, कलाम, नेल्सन मंडेला, 4 तो पढ़ लो 1 साल में. नहीं, अगर बायोग्राफी अगर अच्छा लगता है, biography is good. It's good for inspiration, right? Now if you look at today, Honorable President Draupadi Murmu will tell us about herself on radio. Today is a radio day, है ना? So on 7th at 7 p.m. there'll be release from radio. So anyway,
So this is the something which I wanted to teach. Anything else? कुछ और पूछना है? कंफ्यूजन है कि सर ऐसे कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है ना? और मैंने ये जो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मेन से रिलेटेड पीच, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्लास में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? कहां से पढ़ना है वो भी बता दिया. रीड न्यूज़पेपर every day you should read newspaper, right? You buy newspaper early in the morning, watch Sunset TV regularly. नहीं, it's not helping. Huh? Why? But there is in English language. There are many programs in English language. Diplomatic dispatch now there is a lots of gap happened. अभी नहीं हो पा रहा है. पिछले मई से there is not a single new on diplomatic perspective. There are lots of in English medium. Why are you bothering about? Actually, download the Sunset TV app. I can understand. It's on the YouTube. They are on YouTube, or if you go to Sunset TV, there are many programs in English medium, right? It's not there is a programs in Hindi medium only. Yeah, if you can't understand, you can't. Yeah. So watch it. ठीक है, ये सब काम करना है. ठीक है, और पूछो, कुछ पूछना है तो. Yes, Vanita, Rahul, Ritaksara. I have spoken a lot. Now it's now your turn to speak something. Yes, Ritu, Tarushi, yeah, बताओ. पूछना हो तो. कोई डाउट नहीं है, कुछ संशय नहीं है. भैया ये काम नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा मेरे से. That is not my cup of tea, right? CUT आप इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से मिले, राइट? या CUT PG के लिए आप कोई अत्यंत ओरियंत का किताब खरीद लो और फिर उसमें देख लो क्या क्या सेक्शन आता है, उस पर खुद मेहनत करो. सेल्फ स्टडी, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी. डू सेल्फ स्टडी अ लॉट, राइट? किस चीज में पीजी करना है? पॉलिटिकल साइंस में करना है. अच्छा, कहाँ से करना है? जब तो भर दो सब हर जगह का. अब तो एक ही एग्जाम होता है ना, देयर इज ओनली वन एग्जामिनेशन. There is only one examination. Yes, और कुछ पूछना है? आज नया चीज नहीं पढ़ाएंगे. I'll not talk about new things. ठीक है, हमारे पास 15-16 मिनट है. सुनो ना, प्रियम्बल को खत्म कर लें. प्रियम्बल जो थोड़ा बचा है उसको खत्म कर लें, बस थोड़ा बचा हुआ है. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू प्रियम्बल, राइट? उसको ही खत्म करते हैं. ये कैसे होगा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं और नोट खोल लूं. Now let me finish this preamble. Have you gone through notes? पक्का पढ़ लिया ना? Democratic concept of liberty, justice, equality, fraternity हो गया है. Significance of the preamble, right? Now if you see, let me finish it about the Supreme Court verdict. अच्छा, अगर मैं बताऊं कि प्रियम्बल हमें क्या क्या बताता है तो क्या बताएंगे?
Preamble, what preamble talks about basically? Preamble talks about first thing, the source of authority. Preamble actually tells us, explains source of authority. Who is the source of authority? People of India. Now what is called? Popular sovereignty. Then second, what is called? Nature of Indian state. It explains nature of Indian state. What is the nature of Indian state? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Yeah, nature of Indian state. कौन कौन है? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Right. Then third, it talks about objective of the government, or the objective of the government or the constitution. Objective of the government. What is the objective of government? Justice, justice, liberty, equality, right, and fraternity. इसके बाद unity and integrity, that is also. Unity, ensure unity and integrity of India. ठीक है राहुल, यस राहुल. फोर्थ कहता है, राहुल कह रहा है कि ये हमेशा ये भी बताता है कि डेट ऑफ एडॉप्शन, राइट. ये हमें डेट ऑफ एडॉप्शन बताते हैं. ये डेट कौन सा है? नवंबर 26, 1949. यू नो, ये इतना चीज हमें एक्सप्लेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन. Sorry, preamble. Preamble explains, these four things. One is source of authority. Who is the source of authority in India? Second, the nature of Indian state. Third, the objective of the Indian government. And then fourth is the date of adoption. Clear hai? Shiva, clear? Now, if you see certain judicial, see the judiciary interpretation of preamble. Of preamble. Judiciary interpretation of preamble. Now, if you see, judiciary has dealt with three types of question. First, whether the preamble is part of the constitution or not. If you look at Supreme Court has dealt with three types of question. Three basic question. Question regarding preamble. Now, first is whether the preamble is part of the Indian constitution or not. Whether the preamble is part of the Indian constitution or not. So this is the question that dealt with. Second is whether the preamble can be amended or not, right? Whether preamble can be amended or not. Or not.
Now third question was, is it necessary to look at preamble when we become confused after reading certain article of the Indian Constitution? मान लो कि कोई सा आर्टिकल पढ़े हम लोग, राइट, और फिर पता चला करना क्या है, राइट. If there is any ambiguity, if there is any confusion arises after reading of any clause of the Indian article of the Indian Constitution, then we should look at where? Preamble. Right? So this is the third question. Right? Yeah. Whether the third question, whether preamble can be guiding principle. Guiding principles whenever ambiguity arises. After reading constitution or article or clause or sub clause. ठीक है, समझ में आया? The last one, can preamble be vision, right, or guiding principles whenever and wherever this ambiguity emerges after reading any clause of the Indian Constitution. Now look at the question, whether preamble is a part of the Indian Constitution or not. Now if you look at the Supreme Court in Berry versus Union of India case, Supreme Court held that preamble is not a part of the Indian Constitution, but it is a key to the makers of the Indian Constitutions, right? To understand the mind of the Constitution makers. So पहला है हमारा केस Berry Union versus Union of India case. Berry Union case 1960, no? Yeah, 1960. Now, what Supreme Court said? Supreme Court held that, time है ना हमारे पास, right? हाँ, 4 minute है, बहुत है. Supreme Court held that preamble is not a part of Indian Constitution, but it is key to understand the mind of Constitution framers. This was the statement made by the Supreme Court. Now, you see, this stand of the Supreme Court was inspired by the US judgment. In the US, preamble is not a part of that constitution. Okay? This judgment was actually inspired by the Supreme Court judgment, where in Supreme Court in US, preamble is not part of the Indian Constitution. समझ में आया? Okay. Now, if you look at the second judgment, that was Keswanan Bharti case. Keswanan Bharti जजमेंट कब आया था ये? 1973. ये याद रखना, इवन डेट भी याद रखना है. कब आया था डेट? अप्रैल 24 अप्रैल 1973. अच्छा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इन दिस
You know, in this judgment, Supreme Court said preamble is a part of the Indian Constitution, right? And it can be amended without violating the basic structure, right? Now, if you look at, there was a Justice Khanna, H.R. Khanna, right? And he said, in America, if you look at the Indian preamble and Constitution, in America, preamble work before the Constitution. In India, you know, preamble works along with the Constitution, right? So if you look at preamble, is not implementable alone, but preamble is implementable and foreseeable, you know, in comparison to the any act of the parliament, or any, you know, article of the parliament. It has no independent legality, but it is legal, you know, in comparison to the any clause of the Indian Constitution, right? So इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, समझ में आया? Preamble is a part of the Indian Constitution. Preamble is a part of Indian Constitution. पहला ये बोला, दूसरी बात बोला, the parliament can amend the preamble, but it cannot violate the some basic structure. Parliament can amend the preamble, but it cannot destroy or damage basic structure. Basic structure. Third, it said, you know, preamble is a guiding principle, right? Preamble is, you know, guiding principle. To clear ambiguity. Right? To clear ambiguity. So these are the, you know, actually, right, major point in this judgment. ठीक है? ये एक chapter खत्म हो गया. Next day I will start with fundamental rights. ठीक है? Tomorrow we'll begin with fundamental rights, the part 3 of the Indian Constitution. ठीक, तो आज इतना ही. See you tomorrow. Okay, Asha, Rahul, Ritaksura, Vanita, Shiv. Turn to slide 3. Should I stop then? Yes, sir. चलो मिलते हैं.